Assalamu alaikum my YouTube family, welcome back to my YouTube channel for another amazing video. Let's get into the video. Today I'm going to share my Sunday routine with you guys. So first of all, the magic, just tie up your all hair back ताकि हमें तंग ना करें further. आप देख सकते हैं because it's very hot outside and here you go. The product is in my hand. ये आप जो product मेरे हाथ में देख रहे हैं ये एक organic soap है basically and it called as Diamond Glow Soap और ये मुझे PR पैकेज आया था केयर बाय आमना से. उनका पेज आप जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं. I have been using it from last 1 week. इसकी शेप एक फ्लावर की फॉर्म में है and it is very smooth in texture. You can clearly see it. So first of all make sure करें कि अपने फेस को थोड़ा सा वेट कर लें and then you can see. Now I'm going to just rub the soap on my hands and it will lather up very nicely. You can see. And just apply very smoothly and gently on your face and just massage on your face with very soft hands. Just massage it really well all over your face and don't forget your neck as well. So gently I am done with exfoliating my face with the soap. Here you go, just wash it and you can clearly see the results. It did not dry out my face and my face was really soft, trust me. Now let's get into the second step of my skincare. So this is guys no filter face pack. You can see ये आपके face को cleanse करता है, टोन करता है, rejuvenate करता है and brighten करता है आपकी skin को. Even आपकी जो sun tan हो जाता है उसको भी ये remove करता है. Now it's your choice. आप इसको rose water में भी mix कर सकते हैं, आप इसको yogurt में भी mix कर सकते हैं. Even you can use milk as well. मैंने यहाँ पे इसको रोज़ वाटर में मिक्स किया था और आई एम जेंटली अप्लाइंग इट ऑल ओवर माई फेस. अपने फोरहेड को एंड अपने अपर लिप्स को बिल्कुल भी मत भूलिएगा बिकॉज दिस इज़ द एरिया जो कि आपका टी जोन होता है एंड ये सबसे ज़्यादा ऑयली स्किन वालों के लिए मसला क्रिएट करता है. सो मेक श्योर आप यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करें जैसा कि मैं अप्लाई कर रही हूँ. When you are done applying, you have to at least wait for 20 minutes and let it dry. So guys, I just washed my face and you can see the results. Oh my god. Let's get into the third. So the third step is this rose hydrating mist और ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है. और यहाँ पे मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई. I'm really sorry for that. And just dab your face with very soft and gentle hands and here you can see the results. I hope guys आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी. प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे YouTube चैनल को. And please don't forget to subscribe my YouTube channel and my Instagram as well. Bye bye.